सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम के बारे में। सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम एक सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जो किसी भी डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए यूज किया जा सकता है। दिस एल्गोरिदम डिवाइड्स द अरे और एनी डेटा into two parts, the sorted and the unsorted parts. In each iteration, it selects the minimum element from the unsorted subarray and swaps it with the first element of the unsorted subarray. At each iteration, the unsorted part shrinks and the sorted part grows. Let us understand this algorithm by taking an example. Let us take an example. We have an array. Let us take 7, 2, 4, 1 and 5. Let us take an array which has elements 7, 2, 4, 1 and 5. तो इस अरे में हम पहले मान लेंगे कि हमारा पूरा अरे अनसॉर्टेड है। उसके बाद हम अरे को ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे और इस अरे का मिनिमम एलिमेंट सर्च करेंगे। वो हम कैसे सर्च करेंगे उसका एल्गोरिदम हम लिखेंगे, लेकिन पहले हम इसे समझने का कोशिश करते हैं। हमारा मिनिमम एलिमेंट हमें 1 आएगा, तो हम 1 को अनसॉर्टेड पार्ट के फर्स्ट एलिमेंट से स्वैप कर देंगे, यानी कि यहाँ पर हम 1 लाएंगे और यहाँ 7 लाएंगे। उसके बाद हमारा अरे का ये पार्ट अनसॉर्टेड रह गया है और ये पार्ट सॉर्ट हो चुका है। फिर हम अनसॉर्टेड पार्ट में मिनिमम एलिमेंट सर्च करेंगे, जो कि हमारा 2 मिलेगा। तो 2 को हम अनसॉर्टेड पार्ट के फर्स्ट एलिमेंट से स्वैप करेंगे, यानी 2 अपने ही जगह पे रह जाएगा। उसके बाद ये पार्ट हमारा सॉर्टेड हो चुका है और ये पार्ट हमारा अनसॉर्टेड है। उसके बाद अनसॉर्टेड पार्ट से हम मिनिमम एलिमेंट सर्च करेंगे, जो कि 4 है। तो हम 4 को अनसॉर्टेड पार्ट के फर्स्ट एलिमेंट से स्वैप करेंगे, यानी 4 अपने ही जगह पे रह जाएगा। उसके बाद हमारे अरे का ये पार्ट अनसॉर्टेड रह चुका है। फिर हम अनसॉर्टेड पार्ट से मिनिमम एलिमेंट को सर्च करेंगे, जो कि 5 है। तो हम 5 को अनसॉर्टेड पार्ट के फर्स्ट इंडेक्स से स्वैप करेंगे, यानी कि हमारा यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ हमें 7 मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारा अरे पूरी तरह से सॉर्ट हो चुका है। ये एल्गोरिदम इसी प्रकार काम करते हैं। आइए हम इसका कोड लिखने का कोशिश करते हैं। उससे पहले हम कुछ चीज़ समझ लेते हैं कि हमारे अरे में टोटल एलिमेंट्स कितने थे। 1, 2, 3, 4, 5। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारे अरे में टोटल 5 एलिमेंट्स थे। पहले हमने इस एलिमेंट को इसके सही पोजीशन पर भेजा, फिर हमने इस एलिमेंट को इसके सही पोजीशन पर भेजा, फिर हमने इस एलिमेंट को इसके सही पोजीशन पर भेजा, फिर हमने इस एलिमेंट को इसके सही पोजीशन पर भेजा। जब हमने 1, 2, 3, 4 एलिमेंट को उसके सही पोजीशन पे भेज दिया, तो हमें ऑटोमेटिकली पता है कि 5वां एलिमेंट अपने सही पोजीशन पर ही होगा। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जब हम एल्गोरिदम लिखेंगे तब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। मतलब हम 5 एलिमेंट्स के लिए 4 बार पास करेंगे। इसी तरह अगर हमें किसी एलिमेंट को उसके सही पोजीशन पर भेजना है, तो उस अनसॉर्टेड एरे में जितना भी एलिमेंट्स होंगे, उसमें से हमें मिनिमम एलिमेंट्स निकालना होगा। मिनिमम एलिमेंट्स निकालने के लिए अरे में हमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे, उन सभी से उन्हें कंपेयर करना होगा। आइए हम इसके एल्गोरिदम को समझने का कोशिश करते हैं। So friends, let us try to code this algorithm. First of all, we will have to declare an array. Let us take an array with elements 7, 2, 4, 1 and 5. Now we'll calculate the size of array using the formula int m is equal to size of arr divided by size of dereference operator arr. Dereference operator arr. If you are familiar with C++ language, you can understand this formula. Here we are taking the total number of bytes taken by the array divided by bytes per element. This formula gives the total number of elements present in an array. This formula is efficient for calculating size of any large or a small array. Now we will call the selection sort function, in which we will pass the array and the size of the array. The name of the array is arr and its size is n. So now let us define the function to sort this array, which is selection. So this function will return nothing, so the return type of the function will be void selection. So we know that the number of paths taken by the algorithm is 1 less than the number of elements in the array, because if there are 5 elements in the array and 4 elements are at their position, then 5th element is automatically at the right position. For in the outer loop, which runs for the number of passes, the number of iterations will be 1 less than the number of elements present in the array. So let us write the outer loop for int I is equal to 0, I less than n minus 1, I plus plus. At every pass, we are passing two arguments, int arr and int n. At every pass,
we will assume the first index of the unsorted part as the minimum element, and then compare it with the rest elements of the unsorted part and keep swapping until the variable we will declare int mindex, it takes the minimum element. Int mindex is equal to I. Now for comparison, we will take the second loop for int j is equal to I plus 1, j less than n, j plus plus. Now we'll compare every element with this first element which is stored in mindex variable, and if the mindex is greater than that element, we will swap and so on. Mindex will contain the index of the smallest element. So if ARR at mindex is greater than ARR of j, mindex is equal to j. Now after every pass, we'll have to swap the elements. For swapping, we'll have to do swap ARR of I, which is at first index of the unsorted part, and ARR of index. Now let us see our array has been sorted or not. For that, we'll have to print our array. Where int I is equal to 0, I less than n, I plus plus, cout ARR of I. Now let us run this code to see that our algorithm is working properly or not. So friends, you can see that we have given our array 7, 2, 4, 1 and 5, and after sorting the result is 1, 2, 4, 5 and 7. So our algorithm is working properly.